So, good morning. Hope you all are doing good. Today, I'm going to talk about DMT. It is called DMT by Western people, but India, it is called Kriya Yoga, as Swami Yogananda Paramhansa described it. So, I will keep it simpler and in brief. I will speak in both the language Hindi and English. First, let me explain in English that what is DMT, what is Kriya, and what does it do to human body. So first of all, I would like to tell you that in United States, like Joe Rogan or Lex Friedman, they talk about DMT, and they are so misconceptualized. And you comment on these things in these podcasts, and you will see a lot of people selling some of the substances. So they are making you fool. You do not need to buy anything to get tapped into DMT or Kriya. So I will go ahead and explain you what actually it is, and I will make it clear for all you guys that do not buy anything to get tapped into DMT. You just need your body in the fresh air, like this place. Sit somewhere around. There's fresh air available, and if your legs are molded, sit straight. That is okay. First of all, you cannot get tapped into DMT directly. You will have to meditate for a long time. Your brain cells need to get larger and bigger. For an ordinary person, DMT experience is like getting blackout and falling or getting fit, kind of like they get blacked out and they do not get aware what happened. But for a meditator who meditated for at least 1 year, I will not a meditation just to show the world. You will have to be honest with you, and you will have to sit every morning. You will have to sit for at least 40 minutes, and you will have to listen. In the beginning, you need to listen outer world, listen birds, listen traffic, listen people talking, but do not judge anything. Be like a camera that will go around the city, and it will take all the visuals but not make any judgment about these visuals. Literally, your imagination or your brain is so powerful. We are unaware of power of the brain. We just think, okay, we breathe and we are alive, we eat, and the purpose of life is earning a lot of money, and you are richest, then you are the biggest and you are most successful. But that is not the meaning of success. That is not the purpose of life. The purpose of life is being significant to the world, doing something that is significantly needed to create something that will be helpful for humanity. So that is actually the purpose of life. It is not like you go and earn a lot of money, make some bank balances, and do some charity or whatever. You are not rich in that way. You are not wealthy in that way. You are just an ordinary soul who is not understanding the life or the purpose of life. So let's go. I will tell you what is DMT. So first you need to meditate a lot. So if you have already done meditation a lot, it is a kind of breathing controlling exercise. When you breathe in a gulp of air, but that is not totally oxygen. When you are breathing in, that is the mixture of many gases. Then you breathe out other gases and your lungs absorb oxygen. And then once you breathe out, your lungs pump oxygen in your blood. And in your bloodstream, in your blood cells, in your brain cells, you get enough of oxygen streamed. And when enough oxygen goes through your blood, you literally get blissful moment. You will forget where you are sitting, where you were sitting. You will not be able to figure out with the closed eyes that who you are with. And it will be so blissful, it will be so humbling and loving that you will like to share these things to everybody. You will think that, oh, I should be sharing this blissful and this ecstasy or this euphoric idea to everybody. But let me tell you, my friend, only God can tell anybody about this. If you will go and tell anybody about this, they will not be interested because they are not having their call about DMT inside them. Your inner intellectual will make you reach there, and it will make you eligible of getting tapped into Kriya or DMT, like the Western people say. So when you go into Kriya, it is billion times stronger than any drugs, marijuana or any MDMA or cocaine or LSD or any drugs out there.
Just breathing a gulp of oxygen, it is billion times stronger. It gives you a trip. It make you talk some of the higher intellectuals. You will get to know a lot of new things from inside. You will be getting a lot of knowledge, but after every kriya, after every DMT experience, you will be blacked out. Your central nerve system will be activated, and what will happen that you know you will become so humble. You will become lovable. You will love everybody. You will not hate anybody. And it will be so humbling. You will not doubt or you will not judge anybody. Once, if anybody is having the moment of DMT or Kriya, only they can understand. It is kind of indescribable. And not everybody is eligible to get tapped into this kriyas. First, you will have to be cleaner from your mind. There's a thing called CNS, Central Nerve System. So slowly, you keep doing DMT. Once you get tapped into DMT, it changes your life. You will try to get in the same experience again and again because it is such a blissful moment. As I told you, it is billion times stronger than any drugs. And one thing I want to make you understand that whenever you do any drugs, later when you keep doing drugs again and again, it will not grow. It will be slower and slower, and you will not get such a blissful moment. Like if you smoke marijuana for the first time, you will get a lot of trips. And when you smoke marijuana for 5 years, it will not grow. It will decrease. The trips will decrease. The experiences of those dizziness will be decreasing. But when you do kriya, when you do DMT, it get increasing and increasing. It never stops. It keeps increasing. Every time you do kriya, you get on another level, and you keep getting a lot of knowledge, and you will keep getting a lot of suggestions from your inside. After every kriya, you will be humbling, you will be loving, and you will think like it is a kind of rebirth. It is a kind of near birth experience, or it is a kind of being dead for few seconds. And once you come back in your body, your central nerve system get activated, and it feels like you're getting massaged from inside. You're getting cleaned from your brain. Someone is washing your brain, just by breathing. So this is the only thing you need to know about DMT. I will not go, keep saying it is already a long video. I wanted to keep it brief. You can ask me any question you want to ask. I will be telling you about that, and I will tell you how I know about that. I have experienced DMT myself, and I experience every day. It had changed my life. It had changed the way I love. I do not see anybody separate from me. I see this whole earth as it is one, and that is me, or anybody is one. So I have this experience. That is why I'm able to tell you, and I want everybody in this world to get this experience so that they can get away and they can just, you know, get to know this. It is for everybody. It is not just for one or two person. And now I will be saying in Hindi because I wanted to say in English first because they have misconceptualized DMT. On the name of DMT, they are selling a lot of things. When you watch the podcast of Joe Rogan or Lex Friedman, so what happened when I experienced this, DMT inside me? I didn't knew that it is called DMT or Kriya. It was the self-realization. Later, I searched for it because it was near death. It was an experience I had never had. So I thought to search out on the internet that what is this experience I'm having after doing a lot of meditation. What is this I'm having? So I went on internet and I found out, and there are literally 1 or 2% out of these 8 billion people who are aware of these things, but they haven't experienced it. Only in this world there might be 100 people right now who have experienced DMT, and I am the one of them who had experienced DMT by their breathing control, not by taking some drugs or eating or injecting some liquid or anything. You do not need anything outer. You just need your body. You just need fresh air, and you just need larger brain cells, and you will need all the virtues, vices like anger, wrath,
actually. Wrath, lust, on the name of love, this is lust. On the name of anger, it is wrath. On the name of hunger, it is greed. On the name of, there are 7 of them. And I literally don't want to go in that. It is a bigger concept. I will be making a video another day about this. Today I'm talking about DMT only. Today I wanted to talk about this important thing only. So I will explain my Hindi audience about this. And if you are going to watch this video, you need to realize that you were able to, God has sent you here, and you need to understand the word. It is not about visualization like all the vloggers do. They take visuals like this and this or whatever. I'm not here to ask you to watch this visualization and judge on this. All this video is about the words I'm speaking. If only 100 or 200 people out of this world can literally understand what I am making them understand, it will be literally significant for me, because I am telling this not for any selfish idea of getting views or getting broader audience. I am giving it to my people, to my country, to my earth, to my world. It is mine, and in the same way it is for everybody, because everybody is me. This birds or all these things, all these flowers and everything is totally connected. Like you had lungs. If your lungs get damaged, you will get to death, you will die. In the same way, if the air is damaged and you are not having enough oxygen, you will die in the same way. So all the outer, whatever nature has given on this earth, that is totally connected. That is for a reason. No, none of the man can become owner of earth. You are mortal, you will die. No matter how genius you are, you will die. So just understand it. I hope I have said all the things I wanted to say. But if you have any question, just comment down and I will answer it. And I will keep making video about DMT. I will keep letting people understand about it, okay? So now I will speak in Hindi. I will introduce these things to my audience in Hindi. Actually what is happening, दोस्तों एक वर्ड होता है DMT और उसी को बोलते हैं हिंदी में क्रिया योगा. तो क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करके एकदम पीसफुल हो जाते हो, जब आपके दिमाग में कोई भी द्वेष, कोई भी लोभ, मोह, पाप, काम, ये सब आपके मन को मचोड़ता नहीं रहता है और आपको कंट्रोल नहीं करता रहता है, जब आप एकदम पीसफुल हो जाते हो, जब आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो अपनी अगली गतिविधि को, तब एक समय पे एक चीज़ होता है जिसमें आप अचानक से ब्लैकआउट कर जाओगे और आपको पता लगेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदमय महसूस होगा और आपको लगेगा कि ये क्या हुआ. आपको लगेगा जैसे आप मर के पुनर्जन्म लिए हो. आप सब कुछ भूल जाओगे. आपको आंख बंद करके पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ बैठे थे और ये हुआ क्या. और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है, ऐसा लगेगा जैसे मस्तिष्क के अंदर से सफाई हुआ है, मस्तिष्क के अंदर से हमने धो डाला है और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है कि वो एक्टिवेटेड हो जाता है. तो और ये इतना आनंदमय होता है कि कोई भी ये जो बाहरी तत्व है, भांग, गांजा, दारू, बीड़ी, शराब, गुटखा, तंबाकू, व्हाटएवर, ड्रग्स वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं है. ये जो एक्सपीरियंस है DMT का, जो अंतर से ही आता है, ये है इस ड्रग्स से बिलियन टाइम्स गुना ज़्यादा, अरबों खरबों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है. साधारण मनुष्य इस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता है. जब तक मनुष्य के दिमाग में 36 प्रकार के चिंताएं और 36 प्रकार की सोच भरी हुई है, तब तक एक साधारण मनुष्य इस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता. इसका अनुभव करने के लिए आपके दिमाग में ये जो ब्रेन सेल्स जो मैं बता रहा था, ब्रेन सेल्स बड़ा होता है. धीरे धीरे जब आप मेडिटेट करते हो, जब ध्यान करते हो, तो ब्रेन सेल्स बड़ा होता है. एज स्वामी योगानंद का एक क्रिया योगा नाम का बुक है. DMT को ही हिंदी में उन्होंने क्रिया कहा है और उन्होंने कहा है कि अगर 8 घंटे में कोई व्यक्ति 1100 क्रिया का अनुभव करता है, तो वो इस पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों पर से उसके मन में पर्दा उठ जाता है और वह आनंद की अनुभूति में सदा के लिए रहता है. तो मैं उन चीज़ों पर पूर्णतः विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल मेडिटेशन किया पिछले साल के अप्रैल से. सो ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर आई वाज डूइंग इट. और जब मैं पिछले साल अप्रैल में बड़े ही डार्क टाइम से गुजर रहा था, तब मेरे मन में आया कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए. और जब मैंने मेडिटेट किया और दिल से किया, तो फिर अभी 2 महीने पहले मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली ये जो है DMT क्या है. और मैंने रिसर्च किया और मैंने फाइंड आउट किया कि एक्चुअली लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं. तो मुझे पता लगा कि बेसिकली दुनिया के ओनली 1% लोगों को इसके बारे में पता है. और अनुभव तो मुझे अभी तक एकमात्र बंदा मेरे अलावा दिखा है जिसने इस चीज़ का अनुभव किया है.
तो मैं बाद में इन बारे में बताऊंगा क्या है। मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा इस बारे में। तो क्या होता है जीवन में, आप जब ब्रीदिंग, सांस लेने का सही तरीका जान जाते हो तो आपका जीवन हो जाता है बहुत ही आनंदमय, और आपकी चिंताएं सारी मिट जाती हैं, और आप क्वांटम जंप लेते हो। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का आपने ये नया रिसर्च सुना होगा कि पहले जो हम एक जांच करते हैं तो ये जो हमारे पास ये वेव्स और पार्टिकल वाला एक बहुत सालों से एक डिस्कशन चल रहा था, डिबेट चल रहा था कि इफ़ वी आर वेव्स और एनी पार्टिकल आउट देयर, अगर पेड़ है, पौधा है, कुछ भी चीज़ है इस धरती पे, वो वेव है या पार्टिकल। तो पार्टिकल है जो एक कण है, और वेव है जो एक पानी के तौर पे या हवा के तौर पे जो लहरें हैं। तो एक बड़े स्तर पे जब माइक्रोस्कोप से आप देखते हो तो आप पाते हो कि शरीर के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव, कीटाणु वगैरह पहले से हैं। तो हम दूर से, नग्न आंखों से, ये विजिबल नहीं है कि हम देख पाएँ कि ये जो मनुष्य जा रहा है इसके ऊपर इतने सारे कीटाणु हैं। तो वो कीटाणु बेसिकली आपके लिए यूजफुल है। वो हर हर जो जीव है, चाहे हर विषाणु या कीटाणु, जो विषाणु तो बेसिकली एक्सक्लूड कर दे। विषाणु मतलब यही होता है कि उसमें कुछ विष होगा या कुछ जहरीला होगा, लेकिन बहुत सारे जर्म्स होते हैं अपने ऊपर जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो वही है बेसिकली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी में हम 3 मिनट में इस बात को ख़त्म करते हैं। आप स्वामी योगानंद परमहंस का किताब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने ये सब बातें की हैं। लेकिन वेस्टर्न सभ्यता में क्या हुआ है कि डीएमटी के नाम पे कई लोग कई प्रकार के ड्रग्स, कई प्रकार के मशरूम वगैरह वगैरह बेचने लगे हैं। तो भाइयों, कुछ भी आपको बाहरी नहीं चाहिए, आपका शरीर चाहिए और फ्रेश एयर चाहिए, और आपका दिमाग होना चाहिए शांत, हर प्रकार की चिंताओं से दूर होना चाहिए, किसी भी प्रकार की सोच और किसी भी प्रकार का जजमेंट्स की, आप सड़क पे जाते किसी को देख रहे हो और आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहे हो। आपको एक कैमरा बन जाना पड़ेगा जो पूरा शहर घूम के आ गया और सब देख के और विजुअल लेके भी आ गया, लेकिन उसने कुछ सोचा नहीं कि शहर में वो क्या हो रहा था, इंडिविजुअल्स में क्या हो रहा था। तो आप देखो सब कुछ, लेकिन जजमेंट नहीं करोगे। तो एक टाइम पे आपका एक एक्टिवेटेड होगा, किसी का 2 महीने में ही हो सकता है अगर अच्छे से ध्यान करें तो, किसी का 5 साल भी लग सकता है। मुझे जो 7-8 महीने लगे, अचानक से मेरे साथ एक दिन क्या हुआ कि मैं ब्लैकआउट हुआ और मुझे लगा कि जैसे एक एक न्यूरॉन्स जो मेरे बॉडी का है सब कनेक्टेड हो गया। और इससे बड़ा अनुभव ना मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने अनेकों अनुभव किए हैं, लेकिन इससे बड़ा कुछ भी नहीं था। और फिर मैं रेगुलर करता गया और अंदर से आंतरिक बहुत सारे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जैसे आपने सुना होगा कि उपनिषदों और अनेकों वेदों की जो रचना हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठ के और बाहरी तत्वों से जो ज्ञान आता था उससे की थी। तो दिस इज़ लिटरली ट्रू। क्या होता है कि आप जब पूर्णतः समर्पित हो जाओगे उस सुप्रीम रियलिटी के आगे, परम सत्ता के आगे, जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाओगे तो एक टाइम पे आप पाओगे कि आप एकदम बहुत ही आनंद में हो। उस आनंद का अनुभव साधारण लोग कर ही नहीं सकते हैं। साधारण लोगों के लिए जो भी आनंद है वो आनंद तो आनंद है ही नहीं। जब आपको पता लगेगा क्या है ये क्रिया और क्या असली आनंद है, तभी आपको ये समझ में आ सकता है। नॉर्मली क्या है कि 8 अरब जो पीपल है उसमें से लगभग 7 अरब और 99 करोड़ पीपल को तो इसका नॉलेज भी नहीं होगा, मतलब परिचय भी नहीं होगा कि क्या है क्रिया। कुछ 50 लाख तक को परिचय होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों ने अभी तक इसका अनुभव किया होगा। अनुभव कैसे होता है? ट्रिक है कि आप जब पूर्णतः शांत तरीके से हो जाते हो तो आप सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में बैठो और फ्रेश एयर लो और हवा को जोर से लो और अपने फेफड़े में हवा को रोको 10 सेकेंड तक। तो फेफड़ा एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसको तो ले लेता है और जो दूसरे गैस हैं जो आपके नाक के साथ और ऑक्सीजन के साथ गए हुए हैं उन सबको छोड़ देता है। तो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में खाली प्राणवायु और ज़्यादातर ऑक्सीजन आ जाते हैं तभी आप इसका अनुभव करते हो, और वही डीएमटी या क्रिया कहलाता है। और डीएमटी के नाम पे जो वेस्टर्न सभ्यता में ये चीज़ें चल रही हैं कि मशरूम खरीद लो या कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो समझ लो वैसे कुछ नहीं है। ये जो क्रिया है आपके शरीर में ही आप पा सकते हैं। कुछ भी बाहरी चीज़ें नहीं लेना है, कुछ इंजेक्शन नहीं लेना है, कोई भी द्रव्य, कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी पदार्थ आपको खाना नहीं है। बस आपको सांस लेना है और आपके शरीर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और दिमाग का ब्रेन सेल्स जो है विकसित होना चाहिए। वो विकसित कैसे होगा? आपको 1 साल तक, 1.5 साल तक मेडिटेट करना पड़ेगा, कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा फॉर 24 आवर्स, हर 24 घंटे। और 6-7 महीने में आप खुद ही वो 40 मिनट का 2 घंटा और 5 घंटे में बदलता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और खुद ही आपका स्विच ऑन हो जाएगा, खुद ही आप जानने लगोगे। तो बेसिकली शुरुआत में जब मुझे भी ये बातें, जब मैं वीडियोज़ में देखता था तो मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी, मैंने पात्रता नहीं पाया था इन चीज़ों को जानने का। और धीरे धीरे जब मैंने ये 2 महीने पहले पात्रता पाया तब मैं इन चीज़ों का अनुभव अंदर से करने लगा और
मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं आप सब लोगों से ये चीज़ें शेयर करूँगा। और मैं इसीलिए ये व्लॉगिंग का चैनल ही मैंने इसीलिए बेसिकली शुरू किया कि मैं ये चीज़ें चाहता हूँ कि दुनिया के हर किसी को पता लगे। धीरे धीरे ही सही, आपको इवेंचुअली पता लगेगा। आप अगर अभी एलिजिबल नहीं हो इन चीज़ों को जानने का, तो अभी आपको नहीं, आप देखोगे ये वीडियो लेकिन देख नहीं पाओगे, मेरे शब्दों को समझ नहीं पाओगे, आपके सर से बाउंस कर जाएगा। कुछ ही चंद लोग होंगे जिनको, जो एलिजिबल हो चुके हैं, जिन्होंने मेडिटेट किया है, वही इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने सारे ये वीडियोस देखे हैं, तो समझ लो मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया व्हाट इज़ दिस। आपके पास कोई भी सवाल है इस बारे में, कमेंट में लिखिए, मैं इसके बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बेसिकली यही था। धन्यवाद। और बस अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, आनंदित रहिए।